Distance time graph. A line graph shows dependence of one physical quantity with another. And distance time graph will show dependence of distance with time. And distance time graph will plot time on x-axis and distance on y-axis. In the given graph here, time is measured in hours and distance is measured in kilometers. Now, as we have two kinds of motion, firstly we have uniform motion and another one we have non-uniform motion. In the uniform motion, the distance traveled in unit time interval is same, which means we'll move same amount of distance, or we can say we'll move equal amount of distances in equal interval of time. So in the case of uniform motion, the distance time graph of an object will be a स्ट्रेट लाइन. सो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो ये स्ट्रेट लाइन आपको बताती है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. नाउ लेट्स सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सो वेलोसिटी कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी होता है. फर्स्टली आप इस स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट कंसिडर कर लो. लेट सपोज यू हैव कंसिडर्ड दिस टू पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी. दिस टू पॉइंट्स you have considered. Now from point A, draw a line parallel to x-axis. Now from point B, you have to draw a line parallel to y-axis. Now जहाँ पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पर, I'll highlight this point. ठीक है. Now this point will be your point C. Now you have to draw another line which is parallel to x-axis from point B. अब जहाँ पर ये लाइन, मतलब C से जो x-axis के पैरेलल जो लाइन जा रहा है और B से जो x-axis के पैरेलल लाइन जा रहा है, जहाँ पर वो y-axis को इंटरसेक्ट करता है, उन्हें नाम दे दो S2 और S1. This will be your S2 and this will be your S1. So S2 is the distance at point B and S1 is the distance at point A. Now draw a line from point A which is parallel to y-axis, and these 2 points will be your time T2 and T1. So this is your time T2 and this will be your time T1. Now in order to calculate the velocity of an object, you just need to put down the values in this formula, which is S2 minus S1 divided by T2 minus T1. ठीक है, you have S2 and S1 and T2 and T1. You just need to put down the values in this formula and you will get the velocity of the object with the help of a distance time graph. ठीक है. So this graph is for uniform motion, but what happen when an object moves in a non-uniform motion? So उसमें किस तरह का ग्राफ बनता है वो देखते हैं. So now let's suppose if an object moves in a non-uniform motion, then the graph of an object which poses non-uniform motion is a non-linear curve. ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बनता है.